box. You can download that. And secondly, you can practice along with me. So whatever I'm doing, just try to do that. If you have any questions, you can put in the Zoom chat, and you can unmute and ask also. Okay, so the best way to take the benefit of this session is to uh, work along with me. Okay, and I'll allow you that flexibility to work. So sharing that data with you all that we are going to use. So I've shared one file in the Zoom chat. You can download that. And then I'm going to share my screen. And then we are going to start with this. I hope you have received the file in the chat. Now we can start working with the data. I'm sharing the file in the WhatsApp group as well. You can download it from there as well. Okay, those who are watching us live on YouTube, and if you have come through my group, you will be able to download the file from the group itself. Now, how many of you have ChatGPT into your Excel? Just reply yes or no in the chat box before I'm sharing my screen. Just a small question. How many of you are already having ChatGPT in your Excel? Yes or no? Do you have you integrated ChatGPT in your Excel? Yes or no? Chetan says yes, everyone else says no. Okay, not a problem. Now I'm going to share my screen, and I hope you are able to see my screen now. And I hope my video is not appearing twice. You can just confirm that also, that I'm appearing only in one frame, and you're not getting to see two frames here. Are you able to see? Screen visible. Great. Thank you. Now, what is the difference between my screen and your screen? My Excel screen and your Excel screen. If you look at my screen and if you look at your Excel screen, what is the difference that you can make out or you can see? क्या अलग दिखाई दे रहा है आपको? डेटा तो सेम ही होगा जो एक्सेल फाइल हमने ओपन किया है. व्हाट इज द डिफरेंस दैट आई हैव यू डोंट हैव? ओके, थैंक यू अर्षित. So if you focus on my screen, what where I am pointing now, you will see that I have some additional ribbons, additional buttons over here towards my right hand side. Okay, and you might not have this, correct? So do you have this autopilot, copilot, ChatGPT for Excel or GPT for Word or Excel? Okay, these are extras in my Excel. Yes, these are add-ins and Power Pivot, right, Vishal? So I have Power Pivot, Data Streamer, and you don't have. Maybe some of you don't have the developer tab also. Now, what are these? These are actually add-ins. These are called as add-in. So that means these are some software tools which you can add in to your Excel by customizing your Excel. आप अपने Excel को customize कर सकते हैं और customize करके ये सब चीजें आप अपने Excel में add कर सकते हैं. ठीक है? So what we are going to do is I am going to teach you how you can customize all these things. How you can customize all these things in your Excel.
Now, okay, so we are going to customize all these things into Excel. Now, how will you do that? You'll go to file menu. You will go to file menu, and in the file menu, you will select get add-ins. Okay, there is a section separately for me, or you can go to options, and in the options, you will have the add-in tab over here. Okay, so these are the add-ins tab which is there. Now I'm talking about the power pivot first of all. Okay, so let me zoom in my screen. Okay, and those who don't have developer tab active and power pivot app active, first we are going to do that. First we are going to activate our power pivot and all these things. Okay, so this is what we are going to do. So this is what we are going to do. We are going to activate the power pivot. So what you'll do is you'll go to these commercial add-ins in the manage section and click on go. You will see this window over here where you have data streamer, power pivot, power map, and there is something called as inquire also. Okay. So this is a new add-in. I am also adding it, and now you will click on OK. Now, when you click on OK, you get to see these add-ins on the top. So these are tabs actually. These are called as tabs in Excel. ये सब टैब कहलाता है. तो जैसे ही आप ये एड इन ऐड करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दीज टैब्स ओवर हियर. तो देखिए इंसर्ट दिख रहा है, होम टैब दिख रहा है. ठीक है, ऐसे ही आपको डेवलपर टैब भी दिखेगा, या आपको ये पावर पिवट और इंक्वायर भी देखे. नाउ व्हाट इज दिस इंक्वायर? दिस इज समथिंग न्यू. इवन आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, क्योंकि एक्सेल कीप्स ऑन अपडेटिंग थिंग्स. तो देखिए वर्कबुक एनालिसिस है, यहाँ पे वर्कबुक रिलेशनशिप है, कंपेयर फाइल्स है. लाइक दीज आर न्यू न्यू थिंग्स. ओके, आई आई डोंट थिंक एनीवन मस्ट हैव सीन दिस बिफोर. Okay, now we already have 8 to 10 participants. Anyone who knows about this inquire, Harshil, and those who are already using Excel, आप लोगों ने देखा है कभी ये पहले? Have you seen this before? Yes or no in the chat. जो लोग YouTube पे दिख रहे हैं वो लोग भी comment section में लिख सकते हैं. Do you have you ever seen this inquire before? ठीक है, now let us see what it works. सो सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर वर्कबुक एनालिसिस. वर्कबुक एनालिसिस, show the workbook analysis window. So you click on this. Now it will show you some windows. Okay, so it is showing only changes that I've saved be included in the analysis. Would you like to save the changes now? Let us say yes. Now what it is doing, it is analyzing your workbook. आपका एक्सेल का जो वर्कबुक है उसे उसका एनालिसिस हो रहा है. ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या कि ये बताएगा कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं डेटा में, कितने फॉर्मूलेज हैं. ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो इन दिस एनालिसिस. सच एन अमेजिंग थिंग. This is also I'm looking for the first time with you all live. Okay, so I'm also seeing live. I'm experimenting with this in front of you live. ठीक है, ये मैंने पहले नहीं देखा, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ. So we are on the same page. We are on the same page. हम लोग पहली बार इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. Now, what do you have in this analysis? You have items like summary, workbook. Okay. Now, when there are formulas, cells, ranges, so these are the different segments. Now, when you click on summary, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएशन डेट, मॉडिफाइड डेट, साइज, टाइटल, ऑथर. मतलब पूरा उसका पोस्टमार्टम है पूरा फाइल का, एक्सेल फाइल का. ठीक है, नाउ सपोज आई क्लिक ऑन दिस क्रिएशन डेट. इफ आई सेलेक्ट दिस क्रिएशन डेट, ओके, विल इट गिव मी सम रिजल्ट? विल इट गिव इट सम रिजल्ट? एक मिनट, हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं. एंड विजिबल सीट्स, शीट नंबर 1, देयर इज ओनली वन शीट, राइट? So if you click on formula, if you check formulas, there are no formulas applied in this sheet. इस शीट में कोई फॉर्मूला है नहीं. ठीक है, सेल पे जाते हैं तो टेक्सचुअल कंटेक्ट है ये 2416, मतलब 4000 रोज में टेक्सचुअल कंटेक्ट है सेल के अंदर. एंड इट इज शोइंग यू कौन से सेल में टेक्स्ट लिखा है. ठीक है, हाउ मेनी आर न्यूमेरिक कांस्टेंट, कितने सेल के अंदर नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, एंड हाउ मेनी आर न्यूमेरिक स्टोर्स एज टेक्स्ट. तो 700 आर ऐसे हैं जहां पर आपको ये दिखेगा. नाउ सी, लेट अस सी
P2 वाला जो कॉलम है, लेट अस गो एंड सी व्हाई इट इज कॉलिंग दिस एज न्यूमेरिक स्टोर एज टेक्स्ट। ठीक है, नाउ सी हाउ रैपिडली एक्सेल इज अपडेटिंग इटसेल्फ, और हम लोग कितने पीछे हैं। अभी देखो ये पी कॉलम था, पी कॉलम, आई एम कमिंग टू कॉलम नंबर पी नाउ, यू वुड बी एबल टू सी कॉलम पी, राइट। नाउ कॉलम पी के अंदर टेल मी क्या है, व्हाट इज द हेडिंग फॉर कॉलम पी, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ कॉलम पी, टेल मी in the chat box what is the heading for column P, or you can unmute and answer also. I want interactive session. बताइए कॉलम पी का हेडिंग क्या है। इट इज ईयर, राइट, इट इज ईयर, एंड यू सी दिस ग्रीन एरो पॉइंटिंग अप, ठीक है, ये ईयर है। अभी एक आपको एक्सेल का एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू वन फैक्ट अबाउट एक्सेल विच यू माइट नॉट हैव नोन बिफोर, ठीक है, या आपको पता भी होगा तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, now let us look at some facts relating to Excel. So what I'm doing is on this column number R, column R, I'm typing my name over here. So I'm typing CA Alok Sethi. Now when I type this, you have to answer where it is getting aligned. कहाँ alignment है इसका, किधर गया ये, सी आलोक लिखा आपने, ठीक है, मैंने लिखा है, where it is aligned, left or right, where can you see the alignment of this word? It is aligned towards the left. It is aligned towards the left. Very good, left. Now, let me write some number. Okay. So I'm writing my year of birth, 1986. I'm writing my year of birth, 1986, and I hit enter. Now, when I hit enter, where it got aligned? ये किधर चला गया? Where do you see it? On the right hand side, right. So what is the conclusion? Conclusion is the text is always on the left, the number is always on the right. Text हमेशा left में रहेगा, it is left aligned by default and it is right aligned. ठीक है, अभी चलो ये बात समझ में आया, तो फिर ये जो नंबर है, इट इज अ नंबर, ईयर इज अ नंबर, राइट, ईयर इज अ नंबर। नाउ व्हाई इट इज लेफ्ट अलाइंड, ये क्यों लेफ्ट में जाके बैठा है फिर 2014 ऑफ द सेल, इट शुड बी ऑन द Number राइट। stored as text. करेक्ट, सो दिस इज अ नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, और ये बात हमको इस इंक्वायर ने बता दिया था। इफ यू गो टू दिस टैब अगेन एंड इफ यू चेक, तो अभी देखो आपको यहाँ पर सेल के अंदर दिखा रहा है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, वेयर इज दैट, किधर गया, सर नीचे था। हाँ अभी टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, न्यूमेरिक कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये रहा, ठीक है, न्यूमेरिक स्टोर्ड एज टेक्स्ट, P2 से लेके ये पूरा जो P वाला कॉलम है, ये पूरा दिखा रहा है P701। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर एंड इट इज इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम विद अ एक्सक्लेमेटरी साइन। ये देखिए यहाँ पर आपको जो येलो कलर का एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है, आई जस्ट जूम इन द स्क्रीन नाउ, तो यू आर सीइंग एन एरर ओवर हियर, दिस इज द साइन ऑफ एन एरर। व्हाट इज द एरर? दैट द नंबर इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट। Now what we want to do is we want to convert this into a number only. So we will click on this convert to number. तो अभी देखिए 2014 पहला वाला रो का 2014, it has come towards the right. It has come towards the right. Similarly, if you want to do for every number, what you'll do is you'll select the range and you convert them to number. जैसे ही हमने ये किया है, तो अभी आपको दिखेगा all the numbers are towards the right. Understood everyone? अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोग को कि हमने जैसे ही इसको ठीक किया तो ये सारा नंबर राइट हैंड साइड में आ गया और इट इज अलाइन प्रॉपरली नाउ। ठीक है, नाउ लेट अस डू सम मोर थिंग्स विद दिस डेटा। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा, दिस इज अ सेल्स डेटा बेसिकली ऑफ अ कंपनी which is having segment, country, product, discount, unit sold, manufacturing price, selling price, gross sales, discount, sales, COGS, profit। उसके बाद जो कॉलम है डेट, there is a problem with this column. Can you tell me what is wrong with this date column? Date column में क्या प्रॉब्लम बताइए।
What is the problem with the date column? डेट फोर में नहीं. Hmm? Date is not in the right format. Date is not in correct format. That is the problem. Date is appearing as a number, है ना? 14, 41,640, 41,791. This is not the right format of date. Now why is it so? Because हो सकता है कि आपने जहां से भी डेटा डाउनलोड किया है, डाउनलोड करते हो तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया हो, ठीक है, या सैप से डाउनलोड किया, किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया, फॉर्मेट चेंज हो गया. नाउ दोज हु आर यूजिंग एक्सेल एंड दोज हु हैव अटेंडेड माय प्रीवियस सेशन, ये मैंने बता रखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू अ डेट, विच इज अ डेट एक्चुअली. उसका शॉर्टकट की क्या है, अगर किसी को याद है तो टाइप करिए इन द चैट बॉक्स. इफ यू रिमेम्बर दैट शॉर्टकट की, you type it in the chat box. What is the shortcut to convert this number into a date? Come on. कंट्रोल शिफ्ट थ्री. Correct. Correct. Control Shift and 3 is the shortcut key. So what you'll do is we'll select this entire column and then we'll press Control Shift and 3. So I'll just open my key visualizer so you can see the keys also which I'm pressing on the screen. Now you will see this blue box. इस blue box के अंदर आपको सारा keys दिखेगा whatever I'm pressing on the keyboard. If you want me to repeat anything, you can type in the chat box repeat. Okay, so I don't know whether you are catching up with my pace or not. तो अगर आपको लगता है कि ये क्या हो गया, हम मिस कर गए, तो you can write down R और repeat in the chat box. ठीक है, चलिए. Now what you will do is, what we will do, what we will do, we will look into the we have already converted this. We have already converted this into a date. ठीक है. अभी इसको अगर मान लो अमाउंट में कन्वर्ट करना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस कर सकते हैं हम. ठीक है. इफ यू सी द कीबोर्ड में नंबर 4, उसके ऊपर डॉलर है, उसके ऊपर देर इज अ सिंबल ऑफ डॉलर. दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट द नंबर इनटू अ डॉलर. 3 के ऊपर हैश है, हैश डेट में कन्वर्ट करता है. अगर 2 करेंगे तो टाइम में करेगा, 1 करेंगे तो फिर अगेन इट विल पुट अ नंबर विद अ कॉमा बट नॉट अ करेंसी. ठीक है. तो दीज आर डिफरेंट परसेंटेज एरर और ये सब. तो अभी हम 4 में कर देते, 3 में कर देते. नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू एनालाइज दिस डेटा बट विद द हेल्प ऑफ एआई. ठीक है. मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, ना मैं कोई फॉर्मूला सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल तो सब लोग ही ये बोलते हैं कि एक्सेल में कोई फॉर्मूला सीखने का जरूरत नहीं है, एआई करो और सब कुछ आप चैट जीपीटी से पूछ के पूरा करा सकते हैं. तो वही चीज सीखना है हमको आज. ठीक है. वी डोंट वांट टू लर्न एनी फॉर्मूला. एंड डू यू थिंक इट इज पॉसिबल without actually learning the formulas you can use excel the way it is to be used? Yes or no? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या हम, या करना चाहिए क्या ऐसा? विशाल इज सेइंग यस. ओके विशाल, हैव यू एवर यूज दैट? Mayur says no. AI can be used as a help. No, not only AI, right? See, what I'm asking, what I'm saying is, what point I want to make is that कि हम एआई की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वी शुड यूज एआई ओनली एज अ टूल, एज अ हेल्प, है ना. वी शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन एआई कि सारा काम वही करेगा, हमको कुछ भी नहीं सीखने की जरूरत है. अगर ऐसा हो गया तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब आप का काम भी एआई करेगा, फिर आपकी भी जरूरत नहीं होगी. सो डोंट मेक योर सेल्फ रिप्लेसेबल. और वो कभी होगा जब एटलीस्ट यू नो समथिंग, यू नो मोर देन व्हाट एआई कैन डू, देन ओनली यू विल बी हैविंग अ सिक्योर्ड जॉब. ठीक है. चलिए, नाउ हाउ टू इंटीग्रेट दिस, ये इंक्वायर में और भी चीजें हैं, वर्कबुक, रिलेशनशिप, ऑल दीज थिंग्स, बट वी आर गोइंग टू डू इट एट अ लेटर पॉइंट. ठीक है. क्लीन एक्सेस सेल फॉर्मेटिंग. ठीक है. नाउ कंपेयर फाइल्स, passbook, workbook password. Mayur is also there. Mayur, this is something new which has come up in the Excel. So inquire. Okay, so that we will do later on. But let us now integrate Chat GPT into Excel. ये देखिए, ये जो मेरे पास Chat GPT है, ऑटो पायलट है, ये सब आपके उसमें कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम. ठीक है. सो लेट अस डू दैट.
So what you'll do is you will click on this add-in wala tool. You will click on this add-in wala tool और add-in में जाएंगे आप more add-in में. You will go to more add-ins. What we are doing is we are integrating the tools into ChatGPT. We are integrating the tools into ChatGPT, into Excel, the ChatGPT tool into Excel. Now, when you open this Office add-ins, आपको बहुत सारा लिस्ट मिलेगा यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. You will get many options. Now, how to select what to select, how to know what to select. तो ये सब experiment है. I also experimented and I found out. But we can directly write down GPT over here and type. ठीक है. Now there are some new every day I see a new add-in being added over here in the list. ठीक है. वो कुछ कुछ नया नया आता रहता है और एवरी डे इट इज इवॉल्विंग. ठीक है. आप देखिए अल्फा शीट है, डेटा प्रोसेसिंग इन वन सेंटेंस, है ना. तो वी कैन ट्राई दिस एंड इट इज फ्री ऑल्सो. नाउ देयर आर टू थिंग्स. वन इज दैट you want me to repeat. Okay, so what do you want me to repeat? How I reached there? Office add-ins. Okay, I'll just repeat it. So you'll go to home tab. In the home tab, you will see this add-in section, this window, red color window. Okay, let me just use annotation and I'll show you where it is. So I'm marking it with a green color and a circle. Okay. Now this is what I was talking. Add-in. This is the add-in. Okay. So you click on this add-in. And in this more add-ins, you go to more add-ins. And what we typed is GPT. And that is how I reached here. Understood now, Vishal? Okay, so this is how we reached here. Now there are so many add-ins, which one to install. So I will suggest just go with the one which are free. Okay, because if you go with the additional one, they will allow not in my Excel. Okay, so if you cannot, what Excel you are using? 2013, 16, which Excel are you using? You can check by going to file menu and account. So I'm using the latest version. Which version are you using? If you are using a old one, maybe what you can do is in the search, you can look for this add-in. You can type add-in और आपको options के अंदर ये कहीं तो भी मिलेगा. और you have to search for the Microsoft Store. ठीक है. तो आप स्टोर सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शंस में जाके या कहीं तो you will get this option. Add-ins are there. And in this add-in, you will have this action commercial Excel add-ins. वो करते हैं एक्सेल में तो ये जो इनबिल्ट है वही आएगा. There are some automation related add-ins they have added. That is new, but okay. So you have to search for this. You will get it. Correct. Options in add-in. Yeah. So you will get that add-in, but that add-in is different actually. जो ऑप्शंस के अंदर एड इन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट एड इन होता है. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक अलग एड इन है. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक अलग एड इन है. Okay, so in this option add in, you will not get that add in. Okay, so you will have to look for that in the Microsoft Store or something somewhere. Okay, so this add in is there. You click on this add in and you go to more add ins. And now we will download one add in which is alphabet. We'll try this alpha sheet. Okay, so I'll click on this add in, add and continue. Insert tab में मिल जाएगा कि someone is saying in the insert tab you will get add in. Okay, so I had this thing in my home tab. Maybe you can get into the this thing insert tab also. Now alpha, there was some
error it is giving. One or more add-in failed to load. Okay. So we can work on with some other add-in if it is giving some error. Okay. Let us work on some other add-in. Now there is something called as explore the data. Visualize and explore your data with interactive cross-link charts and tables. Let us use this explore the data. Click on this agree and click on continue. Got which is to be downloaded. Okay, you download the explore the data. There is one add-in which we are downloading. Explore the data. Okay, I'll show you again. Add-ins and we downloaded just one. Explore the data. This one. Explore the data. Now, when I download it and I'm using it, it is showing me this interface. Now each add-in will have its own interface only. ठीक है थोड़ा सा आपको you have to be what you can say you have to have some patience and you should have a approach towards learning new things. ठीक है एआई भी यूज करना आसान नहीं है. लोगों को लगता है एआई क्या है कुछ लिखो और आ जाएगा. ऐसा नहीं है. You have to work with it. You have to practice it. Nothing is very simple. Okay. So it is saying open, import and export, select data in the worksheet and click read data. Okay. Alternatively, you can import data and either navigate to CSV file or JavaScript. Okay. Now what we'll do is we will first select the data and then we will read the data. Okay, we have to select the data first. तो जो आपको डेटा एनालाइज कराना है you select the data. Okay, and let me put this at one side. इसको थोड़ा साइड में करते हैं. Let me put it here and let me select the data. Suppose I want to select these columns only till gross sales, till sales. यहाँ तक हम select कर लेते हैं. ठीक है. And now once I've selected all these columns, what I'll do, I'll click on this read data. Read data. The requested data set is too large. Okay. So that is the problem actually. Let us select only a sample of the data. Let us select only sample data. Let's 20 rows. And now let us click on read data. Now it is actually reading the data. Okay, it is actually reading the data and you will see something over here. So now in this, you have the all the columns over here, right? All the columns are here. Row number, segment, country, product, discount band, and all. Okay, and you have the values over here. It's very cluttered actually, not very good. ठीक है यहाँ आपको कुछ कुछ वैल्यूज इसका दिख रहा है. ठीक है एंड not making any sense. What we'll do is we'll reduce some of the data. Let us keep only simple two columns, segment and unit sold. Segment and unit sold. ठीक है अब देखिए ये सेगमेंट दिखा रहा है एंड यहाँ पर ये आई हैव जस्ट अनचेक्ड सम ऑफ द कॉलम्स. आई डोंट वांट ऑल दीज कॉलम्स. आई जस्ट वांट the unit sold and the segment. Now you see this segment and unit sold, right? What we are going to do is we are going to do some analysis over here.
Now selection sum. So if I do the sum selection, it is going to give me the sum without writing any formula. ठीक है, हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम लोग यही चाहते थे ना, आप लोग यही चाहते थे क्योंकि फॉर्मूला नहीं सीखना पड़े और सारा काम हो जाए। तो हमने सेलेक्ट कर रखा है सेगमेंट एंड यहाँ पे सम आ गया। नाउ इफ आई सेलेक्ट मीन, I'll get the mean. Mean means average. If I select maximum, I'll get the maximum number. If I select the minimum, I'll get the minimum number. तो ये जो भी दिस है, दिस एड इन है, इसमें जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से यू आर गेटिंग द आंसर। ओके, so this is one example of it. This is one example of it. But to use it better way, you have to just uh, let's say we take segment on x-axis and on the y-axis let us take units sold. ठीक है, देखिए कुछ ग्राफ बनना चाहिए अब। ठीक है, it should give us some graph. I'm expecting something to pop up. Let us see. And what are these? Let us put sales also. Let us put profit also. And let us put country. Unit sales profit, country. Okay, doesn't look good. ठीक है, कुछ खास हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, so I will skip this one. Okay, so now see time series. You there are different options actually. You can see different options और आपको वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्री इंडिकेटर्स, ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर, जीडीपी, पॉपुलेशन, ऑल दीज थिंग्स। वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू हैविंग। So based on that data, this tool will work. So I'm just deleting this for the time being. We will remove this. Okay. Now this was one tool. Now I have one more tool which is called as Excel for Chat GPT for Excel. Okay. So that was the free tool. Let me show you, okay, how it is working. This Excel also got shut. Just a minute. Are you able to see the screen again? Okay. Now let us use this Chat GPT for Excel, and it will allow you to write some functions, actually some formulas. It is a free trial based software, but I'll have to check whether the I've exhausted the limits or it is already there. Okay, so I think I've exhausted because it is asking for budget and all. 50 AI calls. Now each paid tool of AI will give you some daily usage कि कितना आप उससे पूछ सकते हैं and what all you can do. Okay, so that will be there. Okay, now see AI dot ask. So okay, so this is relating to AI. Now what we'll do is I'll show you like how different AIs have different formulas. So is equal to AI dot ask. Okay. Now, this is a new function which is a AI enabled function. When you download ChatGPT for Excel, you will get this formula AI.ask. Open the bracket. So what you have to do is this function allows you to submit a question to OpenAI. You can submit a question to OpenAI. Okay. Now what we'll do is we will say we will have to give a prompt. So what we'll do is we will say we will select our data and we will ask AI to give us some
result from that data. Okay, so we have column B has different countries and column E has units sold. So what I'll do is I'll give it a prompt. So give me the give the sum of quantity sold which is in column E based on countries which is in column B. Okay, so give me the sum of quantity based on countries which is in column B. Now let us hit enter. Now what it is saying, see, we have got an answer. Okay, we have got an answer. Now let me use rep tags. Now see what it is giving us as an answer. It is saying to calculate the sum of quantities sold based on the countries in column B, you can use the SUMIF function in Excel. Here is the example. Okay. Now what it has given you, it has given you the hint of what function to use to get the answer, the desired result. Now what you can do is you can copy paste this. Okay, what we'll do is we will apply the same function over here. Okay, so this is the result. Copy this result and Control C and Shift and V. Control Shift and V. So you will be, let us copy it into a new sheet. Let us copy the result into a new sheet and let us paste it. अभी हमें ये नहीं पता था कि अगर मुझे कंट्री वाइज सेल्स निकालना है तो उसके लिए समेफ लगता है. ठीक है, सपोज आई डोंट नो दिस. Okay, then ChatGPT has already given me the answer for this. Now what we are going to do is we are going to work with this answer. ठीक है, ये रहा. अभी हम क्या करेंगे, ये जो सम इफ वाला फॉर्मूला है इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से. I'll copy this and I'll come to my sheet again and I will paste this formula over here. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. Obviously, it is selecting the country, it is selecting the unit sold, but I have to give the country name. So I'll type in the country name as Canada. I want to find out the sales for Canada. And here we get an answer. 22,47,428. So this is how you can use AI. Yeah, ChatGPT gives you better answer with full explanation and it will help you in learning also. So it was a simple question. Now let me complicate this. Okay, let me add some more thing. Give the sum of quantity sold which is in column E based on the countries which is in column B and also based on segment which is in column A. Abhi I have given him three criterias. Now let us see what result do we get. अभी उसने बोल दिया, देखिए how intelligently AI is giving you the answer. To calculate the sum of the quantities sold based on countries and segments, you can use the SUMIFS function. Now, how to use the SUMIF function? It is giving SUMIFS E to E, B to B, country name, A to A, segment name. So entire thing it has given. And if you want it to explain, it will explain also. ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए फॉर्मूले को, इधर ले आइए शीट पे. ठीक है, पेस्ट इट एज टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट. इंक्रीज द साइज ऑफ दिस कॉलम एंड रेप टेक्स्ट. ठीक है, अब देखिए और कॉलम को भी छोटा कर देते हैं तो आपको ये प्रॉपर यू कैन रीड दिस आउट.
Now you can read this entire solution that ChatGPT has given. Now, if you want to if you want AI to explain how this is to be done, so you can say, you can add over here, don't give the formula, just give me hints to get the answer. Now see what will happen. See, it has not given you the solution, but it has given you step by step working. Is it good, guys? Is it good way to learn and get the answer? Okay, so this is how you can apply Chat GPT into your Excel and get the answer in Excel itself. It will give you point by point, word by word, column by column, everything it will mention. But you should know how to give a prompt to Chat GPT. That is what you have to learn. That is what you have to learn. So you have to be elaborative. जैसे आप छोटे बच्चे को समझाते हैं कि उसको क्या करना है, आपके ऑफिस में आर्टिकल को समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, वैसे ही आपको चैट जीपीटी को समझाना पड़ेगा कि आप उससे क्या चाहते हैं. तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. इफ यू आर गुड एट एक्सप्लेनिंग व्हाट यू वांट, देन चैट जीपीटी विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. लेकिन अगर आपने डिटेल में नहीं समझाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज वन प्रॉम्प्ट, AI डॉट आस्क. ऐसे ही बहुत सारे हैं. AI dot extract. Now, what will this do? Let us take one more example. Extract specific type of data from a given text. Now, what I want to do is, suppose you have some pen numbers. ठीक है. एक बहुत ही अच्छा example for the chartered accountants. Suppose I have different pen numbers. Let me go to this sheet. We are just discussing normal things. I'm not going to teach you anything specific, but I am going to explain how to embrace this AI culture and how to use it. ठीक है. फिर आप अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं उसको. सो आई एम जस्ट टाइपिंग सम डमी नंबर और लेट अस आस्क चैट जीपीटी टू जनरेट AI डॉट आस्क और लिस्ट. generate list of 10 dummy pan numbers including pan pan of individual, HUF, company, partnership, and trust. Let us see whether AI can generate this or not. We are experimenting. Oh my God. Do you see 10 pen number have come? Do you see pen number आ गए हैं? But problem is that कि we are chartered accountants. अभी AI कहाँ गड़बड़ करता है? The fourth character of the alphabet has to be a P or a H for HUF or a F for firm or a C for a company, but it is giving us D, it is giving us I, it is giving us O. तो ये गड़बड़ है चैट जीपीटी में. इसलिए यू कैन नॉट जस्ट रिलाय ऑन इट. ठीक है. अब आप बोलोगे सर आपने डमी बोला था, तो उसने डमी में तो कोई भी ले लिया. ठीक है. तो अभी इसको रिप्लेस कर, इसको डमी वर्ड हटा देता हूं मैं. ठीक है. और फिर देखते हैं क्या आता है. इफ आई रिमूव दिस वर्ड डमी, नाउ व्हाट विल हैपन? Again, the same thing is there, right? So we have got this. Now, suppose I have a list of PAN numbers. Let us assume these are real PAN numbers. And I want to extract the fourth digit to find out whether it is a company or a trust or a PF. मुझे check करना है TDS सही रेट से कटा है या नहीं कटा है. I'm taking a real life example, real case scenario now. So what you can do is you can say AI dot extract. अच्छा, अब आपको ये नहीं पता कि इसमें मिड का फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट का लगाना है, राइट का लगाना है, तो आप बोलेंगे AI dot extract and value.
So you will say extract fourth character from the text. Okay, comma, ये बाद में आएगा, पहले वैल्यू आएगा सर. So what I'll do is I will just write the value over here. So first you will select the value and then you have to give the prompt. And here we go. So friends, कैसा लगा आपको ये देख के? Tell me in the chat box. How did you like? Did you like this? Good, awesome. Okay, now we will do one more thing. Okay, एक और चीज दिखाता हूँ आपको. First time attended, yes. So you should come daily now. Daily 9 to 10, we are going to do this session for May, for this May ending, this 4 days, 28, 29, 30. 31st I might not do it, but yeah, for the next 3 days I'm going to do this, and we are going to explore new things, and it's absolutely free for anyone to join. Okay, you have to just invest your time. Now what I want is, we want the status, whether it is company or like what. So what we'll do is, अभी एक काम करते हैं. F आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ C for company. Okay, C for company, P for individual, F for firm, T for trust, C for company, F for A, T for trust, C for company. Now I'll say, now what I'll do is equals to AI dot. Now you have extract, fill, format, list, table, translate. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं इसको कि क्रिएट अ टेबल. ठीक है, टेबल. नाउ व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू विल गिव अ प्रॉम्प्ट एज, हम एक टेबल बनाएंगे, तो प्रॉम्प्ट क्या देंगे हम उसको कि टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम ईच रो इन कॉलम डी. ओके, कॉलम डी फ्रॉम D7 टू D7 टू D16, D7 टू D16. Add a column, add a new column to the right, new column, which should write the following. If the value is C, then company, comma, P, then individual. I can do it with if, but suppose I don't know, then what? F, then firm, T, then trust. Let's see that. Let's see whether it can do it or not. Okay, comma, headers. So header will be let's say pan fourth. So header will put it into this pan fourth character, or comma, type, pan type, या entity type लिख देते हैं, entity type. Let us see error क्यों आ गया. इसको ask कर देते हैं, यहाँ पर है ना, ask कर देते हैं. We have to remove all this. Now what it is saying,
Okay, it has given me the if function. देखिए आस्क किया ना, तो उसने बता दिया कि आप ये कर दीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट कॉपी दिस एंड विल पेस्ट। विल कॉपी एंड पेस्ट। So you have to embrace the power of AI. No, this thing, but we should also try to learn from it. Okay? Just not now. We have got the time. See, guys, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आपको इफ भी आता था, लेकिन इतनी बार कौन लिखता। आपने एक इंग्लिश के सेंटेंस में उसको समझा दिया क्या करना है, एंड एआई हैज गिवन दिस रिजल्ट। दिस इज रियली ऑसम, दिस इज रियली ऑसम। और आप अब बता सकते हैं कि अगर टीडीएस कटा है तो वो सही कटा है या नहीं कटा है, ये भी वो चेक करके बता देगा एआई आपको। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एआई इनसाइड एक्सेल। हर्षल, now anyone would like to share anything, any comments on what you learned today, what you how you felt after seeing all these things? Vishal, you attended for the first time, so how was your experience? You can unmute also. What about others? Ananya, Priyanshu, how to correct the error as my inquiry tab shows continuously unexpected error while analyzing current file, unable to open workbook. Can you share your screen? I would like to see what is happening on this. So if you can, I'll just allow you HP to share your screen because Yes, sir. yeah, I'm making you co-host. You can share your screen and I'll try to answer that. Sir, meanwhile, can you please tell me that how to add inquire Okay. in the ribbon? Okay. So actually to add inquire, see what is needed. You are using 365 Ananya. Yes, sir. Okay. So what you need to do is you need to go to file menu. In the file menu, you go to the last option, that is options. And in the options, you go to add-ins. Add-ins. Okay, in the add-ins. In the Yes, add-in, sir. you will have Excel add-ins. In the Excel add-in, manage Excel add-in, you click on go. In this go, you will get this option. So we are not getting in the Excel add-ins. We'll get in some different order. Let me show you because this was appearing as a new tool. Just a minute. You will go to add-ins and in the add-in, go to com add-ins. Com add-ins, yes. In the com add-ins, you will get this option, inquire. There is some tool which is called as data snapper also. Sniper or sniper, I guess, which can actually take data from document and put it into the Excel. I'm yet to explore this, but I saw a video. It was some CA's video only, and she was doing this snapping thing. I will just also look into it and you will share that thing also. That was very interesting, quite interesting. So I think from this you'll be able to. Sir, I have shared. Yeah, you can Yes, sir. share your screen. Yes. I'll stop sharing. Yeah. Okay, I can see your screen. So in the end, you are getting this option, this error. Yes, sir. Can you close and start again? Just close this window. Okay. And just close this also. Press Control 6. Just remove this.
Yeah, Yes. press Control Control 6. 6. हाँ, Nothing happened. nothing is happening. Yes, sir. Wait. So because I don't So know. can I reopen my Excel Yeah, sheet? just So close this and reopen this file. Don't save it. You are using which 2016? Okay. yes, हाँ, inquire, workbook analysis. Unexpected occur while error while analyzing current file unable to open CHP sample. Just click on workbook. Anything, yeah, and click on the so plus button. nothing happened. Nothing is happening. Yes, sir. Okay. I'm not. Achha, just click on this refresh button on the right hand side bottom. Yeah. Sir, I have tried many times, but same error occurs. तो फिर नहीं मालूम कि क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है, उसके कारण आ रहा होगा। या आप एक काम कर सकते हैं, इस फाइल को डेस्कटॉप पे कहीं और सेव करके फिर ट्राई दैट, क्योंकि इट इज Okay, नॉट sir. एबल टू रीड योर फाइल। प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, जो एरर दिखा रहा है कि नॉट एबल टू एनालाइज, सो मे बी यू हैव टू री सेव दिस फाइल एट सम अदर लोकेशन एंड ट्राई दिस। Okay, sir. ओके। एनी अदर, anyone else who has anything to share or ask? अनन्या, तुम्हारा इंक्वायर आ गया अब? आर यू एबल टू ऐड? Sir, yeah, sir, in add-ins, I'm going to do the add-ins and हम्म then com add-ins. हम्म Then I have done go, and हम्म then options are here: Microsoft Data Streamer हम्म for Excel, Microsoft Power Map, एंड पावर Microsoft पिवट, Power Map Pivot Table. बट All इंक्वायर I इज, have to take. कैन यू ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन? Just 1 second, sir. Sir, actually, I'm continuing it in on my mobile, and other side I have opened my laptop, not ओके in a ओके both. ओके, अंडरस्टूड। ओके, देन व्हाट Yeah. ऑप्शंस आर यू गेटिंग? यू आर नॉट गेटिंग दैट ऑप्शन The ऑफ data streamer, power map, and power pivot. enquire is not Three there. options, sir. No, sir. Then you just check for on Google how to add the enquire Okay. add-in. Yeah, Sure, because sir. maybe you have to update your Excel or something like that. क्योंकि Excel को भी है ना, बार बार अपडेट करता है। I'll just show you one minute. I'll just show you how you can do that. Just a minute. Is my screen visible? Yes, sir. So what you need to do is you need to go to account. In the account, you get this option of update. Update. जैसे मोबाइल को अपडेट Okay. करते हैं, वैसे Yeah, yeah, sir. यहाँ पर चेक ऑन अपडेट करो एंड इट विल ऑटोमेटिकली रन अपडेट्स, इट विल चेक फॉर अपडेट्स। अभी जैसे मेरा अपडेट है 365 अप टू द डेट इट इज अपडेटेड। ओके, सो यू कैन दिस थिंग check for it. And one more thing you can do if you are using 365, uh, यहाँ पर होता है switch license। नहीं, ये वाला नहीं। there is some beta thing that is there, but that will also maybe, but that is not okay, that is not the case। यहाँ पर आपको देखिए, हाँ, अबाउट एक्सेल में आई एम, इट इज शोइंग, फॉर मी इट इज शोइंग दिस बीटा चैनल। ठीक है, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बीटा चैनल। तो यहाँ पर कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि नॉर्मल यूजर्स को नहीं मिलती हैं, है ना? सो मे बी वन रीजन माइट बी देयर, बट नॉट वेरी श्योर। पर ये रहा।
So either you can search for things also. जैसे मैंने अभी ये मेरे को सर्च करना था डेटा स्नीपर, तो ये मैंने यहाँ पर सर्च करा इनेबल द स्नीपर एड इन, अभी ये मैं ऐड कर दूंगा. तो tomorrow we will have a class on this new tool, data sneaper. स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर की बात नहीं कर रहे. Okay, anyways, so we'll stop here day for the day, guys, and see you tomorrow again at the same time, 9 o'clock, and with some new functions. Okay, and if you like this, then you share this with your friends also. Ask them to participate and learn.